shall we just begin with the session? Yes, ma'am. Yeah. So I guess we have a good number of MS patients up here. And if yes, then I'm sure most of you must have had an interaction with me, maybe directly or indirectly. So you know, of lately now, like since 2008, I'm a part of MS Society. I strongly feel that all of you are much more educated about MS than me myself. Like it sometimes feels like a challenge to interact with MS patients because you are so well read, you are so well read that it becomes a challenge to provide you with newer therapies. So today I'm going to just enlighten upon certain tips and tricks, because when to use those tricks, that is more important. You know everything. I'm really sure about it, and Google Baba is full of all the information for you all. So let's see what all can be inculcated in our life from these things. Yeah. So here we go. All right. So are my slides visible to all? Yeah, it's visible. Yes, ma'am. Okay, great. So now we are going to talk about how to improve our mobility. Now, what is mobility? That is the ability to move freely. For few, it is like they should be able to walk to the park, they should be able to carry on their daily errands, going to the market, or for few, it will be just to get out of the bed and reach to their washroom. So mobility is actually a very, it's a very tricky term, and it is variable from patient to patient. So depending upon your needs, we can define mobility in a couple of ways. You're doing your daily errands, going out with friends, or staying in your own home. And very much mobility is about living happily. All right. So for any age, even those who are wheelchair bound, they also want mobility of certain sort. So when we talk about the tricks to improve mobility, first we have to set the goal, what kind of mobility we are looking in for. And every patient is different. Very important thing. I in all my lectures, I make sure you ingrain some important words in your mind, and that should go on a loop mode. Like previously, I always used to say that imagine your movements, imagine your movements. Even if you can do it or you cannot, keep imagining your movements. That is really, really very important aspect of rehabilitation, and it helps us to remain connected to those neurons which were responsible for the movement. Okay, so जैसा कि हम लोग हमेशा से बोलते आए हैं, never never let your brain forget your movement. Similarly, the same mantra goes for mobility. You use it or you lose it. The day you decide कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, you've already lost the battle. Okay, because mobility can fade away very easily. Many factors that affect your mobility and keep you independent. Few of them are exercise, your diet, preventive care. This is really, really very important, and lifestyle choices. That will keep you stronger and steadier with fewer aches and more stamina. See, like over these years, I have met many, many MS people, even in India and overseas. And the thing is, in India, we still have a lot of choices we can easily make. When I talk about my French MS group, the problem is they don't have a choice. उनको drive खुद से ही करना है. The family system is very nuclear kind of it. There is no one to assist them on everyday basis. But many of us in India are lucky enough that we have a good team looking after us. But then we have to make good choices to keep ourselves mobile and healthy. Important thing is how to stay mobile as you age. Please remember, we all are aging. Whether you have MS, you don't have MS, or you are an MS caregiver, we all are aging. So there is not much decline in your muscles between 20 to 40, but after 40, there is a decline of 1 to 2% per year and 1.5 to 5% per year in your strength. Now imagine this is a normal aging process, and on top of it, I have MS. So how much decline of my strength is going to take place per year?
Fast twitch muscle fibers, they shrink and die more rapidly than others, leading to a loss of muscle speed. And you can well imagine, if I am having a loss of my muscle speed, my activities are going to go slow, my actions will become more delayed, and that will lead to a lot of frustration. Because what happens, what is the problem with the human nature, हम पीछे से बहुत कंपेयर करते आते हैं कि पहले मैं ऐसा कर पाती थी, पहले मैं ऐसा कर पाता था. We have to start living in now. I got MS. Now I have to understand how to take care of my body, and I'm aging also. So both things have to be taken together to keep me as mobile as possible. And most important, as you age, it becomes more important to exercise regularly. Perhaps even increasing the amount of time you spend exercising to compensate for your bodily changes in hormones and other factors that you cannot control. So, good news is participating in exercise to improve strength and coordination as you age. Now, MS, they do get fatigue. So, should we exercise? Should we exercise? Yes, we still have to exercise within a controlled environment and within a controlled dosage of exercise. Okay, because we have to undo the effect of aging, we have to undo the effect of demyelination with the help of exercise, and of course, the medications that go in parallel. Then we have to improve our balance to maintain mobility. Agar hum girte ja rahe hain, we don't have balance, then definitely our mobility will be affected. So three simple exercises. This is just for the example, like rock step. This we commonly use it in clinic for quick testing कि आपका balance and coordination कैसा है. अगर आप ये rock step ले पा रहे हैं, अगर आप tandem walking कर पा रहे हैं, या आप ये braiding कर पा रहे हैं, criss cross movement कर पा रहे हैं. I'm sure each one of you knows many other balance exercises also, but this is just a quick revision kind of thing. Next, do you need a physical therapy to improve your balance, improve your mobility? We usually ask three major questions. What are your limitations? And more important than that is, what are your goals? What do you want? And this is super important question to me. Trust me, like this is something which gives us an exact idea ki, is my patient serious enough? Are you committed to this plan? Well, next year, last year, when we happened to have this India MSA celebration in Kokilaben Hospital, Mumbai, so I had in-person interaction with MS patient, and my only take-home message is, all the programs, everything is available online. Are you committed? All the time what I get to hear is, madam ye kaam tha, wo kaam tha, ye ho gaya, my children, my husband, my family, my work, my this and that. I know everything is important, but there is an inevitable truth which is always going along with you, is you are an MS patient. All right. So your commitment will change the game. It's only and only your commitment. I'm not here right now to give you specific exercises that will work as a magic wand and they will make you mobile overnight. No, you have to make yourself mobile. आप ही अपने आप को मोबाइल बना सकते हो. And trust me when I say this, I have such inspiring stories of the patients who are so committed that sometimes my commitment falls behind them. They are like, ma'am, हमने ये भी exercise कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया. We feel better in this. What's next for us? What's next goal for us that we are ready to scale on? So please remember, it's your commitment which will change the game. And how much exercise do you need? This is general recommendation by US Department of Health and Human Services. That is about 150 to 300 minutes of moderate exercise a week. And I will say this works very well even for MS patients. So in MS, what you have to do is, you have to do a lot of energy conservation thing. You have to understand, where do I have to spend my energy, and exercise will always stand on the top priority. They also recommend twice weekly strength training sessions and balance exercises to prevent fall. So imagine, already we are aging, we are becoming more probable to fall, and then we have a burden of MS on us, so the probability increases many fold. So the commitment is something which is very important. So
The guidelines state when older adults cannot do 150 minutes of moderate intensity aerobic activity a week because of chronic condition, they should be as physically active as their abilities and condition allows. Okay, so you can be as active as your ability allows, but do not underestimate your ability. Keep yourself always higher. You know, अगर आप खुद पे गर्व करेंगे then only you'll be able to achieve your goals. आप एमएस से लड़ रहे हैं, आप एमएस को मात दे रहे हैं, so you have to keep yourself at the highest respectable position. You are the only one and your body is the only thing which is actually being affected. Okay, move more and sit less throughout the day. And for ms, when I say move more, if you are feeling कि normal चलने में दिक्कत हो रही है, you can always and always go for assistive devices that will help you to conserve your energy. Okay, some activity is always better than none. Next we come to fall prevention strategies. Okay, one of the best ways is understand why people fall. So what you have to do is you have to make a check whether it's your balance, whether it is your home environmental thing, whether you have loose rugs at home, or actually your body is becoming frail that is causing you fall. So find out if there's muscle weakness, your walking problem, your postural problem, your foot or ankle problem, your weight changes, and even lack of sleep. Lack of sleep is also very, very, very important factor. When we see the patient who has slept well for over 6 to 7 hours, they perform well in their exercise sessions as compared to those who compromise on their sleep. Next, fall prevention exercise, what we say to improve your mobility, target strength, target balance, and target your endurance. Endurance is the ability to carry on work for a longer duration. Okay. So if we talk about strength, stronger your core and legs, the better you stay balanced and move around. So when I talk about core, I know most of you know I am talking about these golden words. I started my India journey of Pilates under the ages of MS only in 2011. So this is something I swear by. Always strengthen your core. Everything will start falling into place. Functional exercises that mimic daily activities like as simple as rising up from chair, that all you have to practice. Weight training exercises and resistance training, use your body weight to challenge your muscles. All right, there is not everyone is suitable for external weight, but definitely you can do close chain exercises to keep your body strong. So first factor done. Second is your balance exercises that improve balance. One is yoga, and I know there are a lot of wonderful ms patients themselves who have been advocating yoga beautifully. They themselves do a lot of yoga and they inspire others. So that's one thing. Tai Chi, we did a small study long back about Tai Chi in MS patient. It was very effective. And Pilates is something like I can vouch. It's one of the best techniques to improve balance. And balance training exercises that also you can do to improve your static balance and dynamic balance. Because to improve our mobility, हमें खड़ा भी stable रहना पड़ेगा और चलते समय भी हमें stable होना पड़ेगा. So you have to target both the domains to improve your mobility. Next is endurance. The best way to maintain your endurance is aerobic exercise. Aerobic exercises अपने heart rate को थोड़ा ज़्यादा work कराएंगे and उसका heart rate बढ़ने देंगे. So when we do aerobic exercises, it trains our body better. So you can go for water aerobics, dance, Zumba, cycling, stair climbing, walking, swimming, anything that you like. Even simply lifting your hands up and clapping up and down, move it up and back, they all come into aerobic part. How much soever your body allows, just go for it. And you have to reduce the fear of falling or staying active. There are a lot of patients who says मैं ये करना चाहती हूँ पर डर से नहीं मैं कर पाती. Please enlist the factors कि आपको किस चीज से डर है. Do you have fear of falling or you have fear कि आप जैसे ही खड़े होंगे चक्कर आ जाएगा. आप जो जो चीजें point out करेंगे, आप लिखेंगे, it will become very easy for the therapist to solve each one of them. आप जब तक problem clearly नहीं लाएंगे,
it's very difficult to find a solution. Okay, so this you can reduce your mental fear by improving your balance, strength, flexibility, gait, and most importantly, your motor imagery. A lot of times, a lot of sports player, they, howsoever big player they may be, they always have a fear from the game. So before they go for the game, they do a lot of mental imagery thinking, I'm going to do like this, I'm going to perform like this, I will be handling my ball this way or shuttle this way, like that. That gives them mental strength, which then translates into their muscle action. All right, so you have to reduce this fear, and this is very important factor to improve your mobility. So always try this trick. हमेशा आप सोचिए कि मैं कैसे क्या करती थी या करता था, and chalta tha. That will really, really, really help you a lot. So when you are feeling stronger and more confident about, you will focus on improving your gait. So mental imagery, motor imagery, they play a very, very important role in improving your mobility. Are you dragging your feet? At least 6 hours of sleep. I know most of you complain कि हमें नींद नहीं आती है. There are lots and lots of methods. Few people opt for medications. Few people opt for meditation. Few go for just exercising before your sleep time, making sure you don't eat at least 1 hour before your sleep time, making sure you don't drink too much of water at least 2 to 3 hours before your sleep time, so that all the distraction which might break your sleep cycle, just try removing them one by one, and you never know which one works. In fact, we say no screen time at least 90 minutes before your sleeping time. So find out what is not letting you sleep. Maybe it's your thought, or maybe the lack of getting tired, anything that works, but you need to have at least 6 hours of sleep. Sleep is really one of the best medicines. Now, let me talk about our journey so far. And I guess you must have got a little bit of tricks how you can make your body more mobile, how you can work on your weaknesses. But most important is you have to understand your weak points. What is that which is pulling you behind? So this is my little department in Bihar, Patna. And yeah, this was my book launch that we were talking about, like in September 2011, in one of the MS interactions. I launched my book on Pilates in rehabilitation. So that's why I say core strength is something really, really, really very important to improve our mobility and general well being. And since then, there has been lots and lots of awareness programs which I have done in Mumbai, Bangalore, Jammu, lot of regions in Punjab, and in Delhi, even in Patna. There have been a lot of CMEs that we have been organizing regularly to make people aware about role of Pilates in rehabilitation. So even with a lot of MS chapters, I had a chance to interact, and JIPMER, Chennai chapter and all. And yes, there was a very interesting interaction in Japan with the MS patients. So that was really interesting when they were coming forward with their questions like how to improve our mobility if we are wheelchair bound. As you can see, a lot of them are already wheelchair bound and they are so independent. I know our roads are not that friendly, but there the people were navigating on the roads even for their local transportation and all in wheelchair. So there is a lot of, I say, grit that is required to improve your mobility. Now, sample rehabilitation exercises facility which are available for MS patient in our department. This is partial body weight support, treadmill walking. So we feel this is one of the very, very effective ways to lighten your body and do aerobic workout. These are equipments to improve your balance.
Now, Yes, ma'am. can you see these exercises? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. We Yes, ma'am. can. मैम सुप्रिया ही है Yeah. क्या आप थोड़ा सा एक लिटिल बिट हिंदी में भी क्योंकि कुछ लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा है इंग्लिश नहीं अंडरस्टैंड है Done, थोड़ा done, सा done. I'll do that. ओके I'll do that. जिम मध्ये जाऊन करावं लागेल ग. बघतीये ना ते जिम मध्ये व्यायाम सांगते ती जिम मध्ये Okay, so this was the sample exercises which I'm sure every rehabilitation department that you go, आपको आसानी से exercise मिल जाएंगी. And the thing is, mobility increase करने के लिए program हमेशा tailor made होना चाहिए. Okay, it should not be a general program. It should be आपकी limitations को देखते हुए. Similarly, we started with the e-physiotherapy program, the tele-physiotherapy program. दैट वाज वे बैक इन 2021 जिसमें काफी सारे लोगों ने आप लोगों ने भाग भी लिया था जो कि हमने 8 मार्च को शुरू किया था विच वाज अ 6 वीक्स प्रोग्राम जिसमें एक्सरसाइजेस वर गिवन ट्वाइस वीकली एंड हमने पेशेंट परफॉर्मेंस वापस एज अ फीडबैक लिया था एंड जो जो गलतियां थी उसको हमने इम्प्रूव करवाया था एंड लॉट ऑफ पेशेंट्स लिटरली हैड अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन देयर वॉकिंग एबिलिटीज. सो दिस वॉज हाउ द फीडबैक यूज टू बी सेंट एंड हम लोग उनकी वीडियोस को पूरा एनालाइज करते थे एंड उसमें जो जो हमें गलतियां दिखती थी कि आपका पोस्चर ऐसे ठीक नहीं है वट एवर वी यूज टू फाइंड वी यूज टू कन्वे इट बैक टू देम. And about this program, other features was that it was so easy for everyone to access because it was available on YouTube. कुछ भी नहीं करना था, जो भी हमारे participants थे उनका हमने initial analysis लिया था और फिर उनको अपनी योग्यताओं के मुताबिक उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से हमने एक्सरसाइज प्रोग्राम दिया एंड वीक बाय वीक हम लोग प्रोग्रेशन करते थे. Okay. Next, Ma'am, we would like to join. in 2022, फिर हमने क्या किया? We talked about motor imagery. 2021 was all about because COVID में सब लोग locked up थे, so we thought कि we have to reach out to each MS patient. उनके घर तक हमें किसी भी तरीके से पहुंचना है और उनको अकेला फील नहीं कराना है कि चाहे लॉकडाउन है वो अपने गांव में है wherever they are, we are there to provide them services. Then in 2022 हमें realize हुआ कि काफी पेशेंट थे जिनको हम लोग फर्स्ट फेज में नहीं ले पाए बिकॉज ऑफ देयर इंक्रीज लेवल ऑफ डिसेबिलिटी. जो हमने 2021 में लिए थे वो लोग सब मोबाइल थे, वो एटलीस्ट 6 मिनट तक चल सकते थे. 2022 में हमारा यही उद्देश्य था टू टेल देम यूज योर इमेजिनेशन पावर. इफ यू कैन नॉट इमेजिन यू कैन नॉट लर्न. सो वो जो मूवमेंट नहीं भी कर पाते थे वो सब हमने उनको बोला आप इमेजिन कीजिए एंड दैट विल रिजल्ट इन इम्प्रूवमेंट इन देयर मोटर पावर. सो एज अ रिजल्ट ये जो हमने अपना प्रोग्राम चलाया था दिस इंटायर थिंग आई वाज वन ऑफ द फाइनलिस्ट इन एमएस ब्रेन हेल्थ अवार्ड्स जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड जिन लोगों ने कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स ये सब किए थे इन द इंडिविजुअल कैटेगरी फॉर द एमएस पेशेंट्स दे वर रिकॉग्नाइज. सो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि हमारे इंडिया में जो हम लोग एमएस सोसाइटी के अंडर ये काम कर रहे हैं it is actually very promising and it is helping a lot of MS patients at large. Then last year, as I mentioned, Kokila Ben में we had another offline program with our MS patient जिसमें हमने capturing the untapped imagination power उसी चीज पे हमने discussion extend की. But those who attended my seminar they know it. मेरा एक ही question उनसे था, what is their sincerity level? आपने एक प्रोग्राम में इनरोल करने के बाद
अपनी एक्सरसाइज कितने दिनों तक या कितने सालों तक कंटिन्यू की है एंड आपका मोबिलिटी स्टेटस अब क्या है. Unfortunately, the commitment level from here, it started coming down here, 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 and here. And when the commitment goes haywire, हमारा coordination level भी गिरता जाएगा, mobility level भी गिरती जाएगी. So that's why in the beginning of my talk, I said, you are the warriors, you are the real guide, you are the selector for the therapy, and you are the conqueror. So everything is on your shoulders. हम बस एक सहायक हैं. We will join you, guide you, and we will look for you to fly alone. So another thing that I want to add कि आप कहीं भी जाएं, किसी भी रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाएं, प्लीज मतलब एक जो कॉमन सवाल होता है कि हम क्या करें टू इम्प्रूव योर मोबिलिटी. द सिंपल आंसर इज आप एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मांगिए जिसमें रिसर्च एविडेंस भी होगा, डॉक्टर का, आपके थेरेपिस्ट का क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी होगा एंड आपकी एक प्रेफरेंस भी होगी. इन तीनों के समावेश से, इन तीनों के जोड़ से ही एक परफेक्ट गोल ओरिएंटेड थेरेपी डिजाइन होती है. सो ऑलवेज मेक श्योर देयर इज नो एक्सरसाइज विच इज हेल्पफुल फॉर अदर्स, इट विल बी हेल्पफुल टू यू. आजकल यूट्यूब में बहुत कुछ भरा हुआ है, गूगल में बहुत कुछ भरा हुआ है. आई रिवर्स्ड माई MS symptoms with this, I reversed with that. People are trying all kind of drug. Stay committed to few but stay committed. आपके जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, just stay committed. अगर आप कोई alternate medicine ले रहे हैं, उसके साथ stay committed. Commitment is something which is actually going to help you. अगर आपको लग रहा है कि you've been committed for quite a long time and it's not helping, then definitely there's a time to switch. Okay, so if I talk about evidence-based practice, acoustic wave therapy is something that I introduced in my center in last August 2023. And it is like ultrasound, which is 1,000 times more stronger. And the results have been so promising. And I was so happy that जब मैं इसकी research MS patients के लिए कर रही थी. In fact, one day I called Sheila ma'am and I was like, ma'am, I've got a new machine which is so effective in musculoskeletal disorders. I want to do it on my MS patients too. It promises a lot of good results. And she's like, great, go ahead. I'm never going to stop you from anything that you try. And then I saw in 2015 there was an Italian group जो already इस पे कर चुके हैं. And they are seeing good results in their spasticity management. So they did a study on 68 people, which has been very well mentioned by the newsletter by MSIF. And 34 patients received the shockwave and baki ka dummy tha. And the main study that 4 session caused significant pain reduction. So that's what I'm saying कि evidence based practice में आपकी preference, हमारा experience and what other researchers are saying, उन सब का मिला जुला से ही we can actually bring about a lot of change. And this was a beautiful thing that I found online, that she's an MS patient and functional scoliosis due to MS, bad posture. After just 3 treatments, 3 weeks later, and after 6 treatments, 4 years later, you can see a good spinal posture. And in fact, जो drug induced, injection induced आपका paniculitis होता है, उसके लिए भी shock wave therapy or the acoustic wave therapy, that is my preferred term for it, वो इस चीज को reduce करने में significantly help करता है. And if we talk about a lot of publications, then yes, in other neurological disorders, it's being used. So this is one study, the same 34 MS patient, they received 2000 shocks at 1.4 bar at 4 hertz, 4 sessions, 1 week between the session, and muscle tone was decreased 1 week after the last session, and pain was decreased at all follow-up evaluations. So to reduce spasticity, acoustic wave is actually helping a lot. It's helping a lot. So this was published in Frontiers of Neurology in August 17, 2022. You can have a note of that.
And then, yeah, recently I visited Australia and it was so fantastic because they use a lot of shockwave. Almost all major centers in St. Kilda side or in Melbourne side, we had a great interaction learning about how it is actually helping a lot of orthopedic cases. They are doing less work on neurological patients, though, but definitely all of them, when we discussed with them, they all agreed to it. Ki definitely it has promising effect in the neurological cases also. And then another therapy which these days is my favorite, that is laser therapy. It's nothing new. Cold lasers have been used since ages now. So photobiomodulation therapy, which is the cold laser that we use, that also helps in neurological disorders, and it has a neuroprotective potential, but the main question is exact mechanism is not understood. So even now, after using these therapies on so many patients, like if I count from August, we have more than 400 500 neurological patients, because the setup which I work on, that's purely neurological cases. But why it is helping, or how it is helping, that mechanism is still unknown. So there was another study about role of low laser therapy in MS. So they said low laser, it inhibits inflammatory signaling pathways, improves cell viability, inhibit toxicity, modulates immune responses, and promotes growth factors. So I as of now, like अभी के लिए अपनी limitations के दायरे में, because I'm a clinician, less of a researcher, but more of a clinician. ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या हो रहे हैं वो मैं नहीं स्टडी कर पा रही हूँ, बट जब भी मैं पेशेंट पे ये चीज अप्लाई कर रही हूँ, आई एम सीइंग बहुत सारे प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स. सो आई एम ब्लाइंडली फॉलोइंग दीज पीपल जिनके पेपर पब्लिश्ड हैं, कि जो ये लोग कह रहे हैं डेफिनेटली ये हो रहा है, इन्फ्लेमेटरी पाथवेज में कुछ ना कुछ अफेक्ट आ रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड सेल्स में रिलीज हो रही है, जो कि हमारा किसी तरीके से इनको हेल्प कर रही है हमारे पेशेंट्स को. सो दैट इज अ थॉट, that is the evidence जिसको दिमाग में रखते हुए I am just continuing with my patients. So there are two reviews that I would like to share with you people. They are neurological disorders, they are not MS, but somehow इनमें हमने ये latest technique along with the regular physiotherapy use किया, and we had certain promising results. So first case, he is a case of facial palsy, जिनको अगस्त में facial palsy हुई थी, and he came to us now in January with a residual deficit. Now keeping the same thought in mind, that my laser and acoustic therapy, it's going to decrease the inflammatory process, वो nerve regeneration में मदद करेगा, जो researchers कह रहे हैं, because I cannot see visibly, but मैं क्या देख सकती हूँ, electrophysiological parameters. जब मैं इनके nerve conduction test first day करवाती हूँ और ये therapies देने के बाद nerve conduction test करवाती हूँ, उसमें जब मुझे changes मिलते हैं, तब एक विश्वास आता है कि yes, these therapies are definitely suitable for neurological patients and we can continue using them. Because human beings को हम as a guinea pig नहीं use कर सकते. There should be an evidence and patient की acceptability to try on these new therapies. So let us hear from him. क्या तकलीफ थी जिसके लिए आप बिहार न्यूरो में आए? हाँ, नमस्ते मैम। एक्चुअली मेरा फेशियल पाल्सी का प्रॉब्लम था। अगस्त 2023 में हमको फेशियल पाल्सी हुआ था और रिकवर हम नहीं हो पा रहे थे। कई जगह हम ट्राई किए थे, कई फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए थे और ट्राई की कम से कम रिकवर हो जाए। हालांकि उनके बाद हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में भी गए, लेकिन रिकवरी नहीं हो पा रहा था। थोड़ा सा हुआ था रिकवरी, नो डाउट। अगर बात करें जितना मेरा था उसमें से करीब 60% तक रिकवरी हुआ था, लेकिन 40% रिकवरी नहीं हो रहा था। आपका नाम बताया, जसप्रीत कौर का नाम बताया कि आप उनसे एक दफा मिलिए, और मिलने के बाद हम नो डाउट एकदम ड्रास्टिक चेंज आया। अगर देखा जाए तो 4 सेशन हम लिए, 4 सेशन लेने के बाद जो मेरा शेप था वो शेप आना शुरू हो गया लिप का। इवन पहले हम सीटी नहीं बजा पाते थे, अब हम सीटी बजा पा रहे हैं। तो ये देखने को मिला और खास बहुत खुश है, क्योंकि हम उम्मीद छोड़ दिए थे कि अब मेरा रिकवरी हो पाएगा, और इसकी वजह से हमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। नो डाउट अगर हम इंग्लिश का कई सारा प्रोनाउंसिएशन का अगर बात करें तो प्रोनाउंसिएशन आने में बहुत प्रॉब्लम दिक्कत हो रहा था। इवन अगर लो साउंड में अगर बात करना चाह रहे थे, लो पिच में, तो प्रोनाउंसिएशन आ ही नहीं पाता जब तक हाई पिच नहीं लाते थे। तो ये प्रॉब्लम हो रहा था किन्हीं के साथ, अगर लो पिच में बात करना चाहते थे तो अच्छा से प्रोनाउंसिएशन नहीं आता था। और जब यहाँ आए तो आने के बाद नो डाउट
एडवांस लेवल पे फिजियोथेरेपी मिला, जैसे कि एक्यूस्टिक वेव थेरेपी हमको दिया गया, लेजर थेरेपी दिया गया, और विद इन 4 सेशन मेरा बहुत चेंजेस आया और हम बहुत खुश हैं। अब हमको उम्मीद लग रहा है कि हम कंप्लीटली 100% रिकवर हो जाएंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। Now, there is another beautiful case of transverse myelitis. And just to give you an introduction, transverse myelitis is हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जब एक इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको हम लोग ट्रांसवर्स मेलाइटिस कहते हैं। और वो जितने हिस्से में होता है वहाँ की नसें काम करना बंद कर देती हैं और हमारा पेशेंट जो हिस्सा अफेक्टेड है उस हिसाब से बेड रिडन हो जाता है। Okay? तूफानों को छिड़ के से लो छीन ले आशाएं, उम्मीदें हंसे होगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं होगी, उम्मीदें हंसे होगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। तो आज देख ले मैं टिफिन कर देख ले टिफिन आ गया। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको। So basically, she is one case who taught us more lessons than what we could do for her. हमारे पास तो acoustic wave last year August में आया था 15 अगस्त को, but since then she is being continuously coming for rehabilitation, whether it was partial body weight support exercises, whatever. And अगर इनका MRI आप देखेंगे जो 2017 में हुआ और जो last year December में, same short segment inflammatory change in your cervical cord. So we don't know, like if I talk to my neurologist, they are like, we don't know how it is helping, how it is working, because she was absolutely bedridden. She was absolutely bedridden. कुछ भी नहीं, bed भी नहीं पाती थी with so much support. So that is what I'm saying. If you want to improve your mobility, it is more about your commitment. If you are committed, then you can scale any mountain, any mountain. Thank you so much for listening, and I guess I have made my take home message very clear कि आपकी mobility बढ़ाने के लिए हमारे इंडिया में सारी थेरेपीज अवेलेबल है। आई एम वेरी हैप्पी कि जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट से हमारा इंटरेक्शन होता है कॉन्फ्रेंसेस में, दे आर ऑल वेरी वेल वर्स्ड विद देयर सब्जेक्ट, दे आर ऑल वेरी एक्सपीरियंस, एंड जरूरत है आपकी उन तक पहुंचने की। That's it. Thank you so much for listening. Excuse me, ma'am. I want to ask something. जी जी Hello. जी Thank you. Thanks, ma'am. Hello. Yeah, Mridula ji, you can ask the question. एक्चुअली मुझे एमएस है, मेरी आंखों मेरी आईज को लेके प्रॉब्लम है कि मैं फोकस नहीं कर पाती हूँ एक चीज पे। और तो इसका फिजियोथेरेपी में कोई है क्या ऑप्शन?
देखिए, अगर सिर्फ आईज की बात आती है एंड आपका डबल विजन का कोई केस है, तो वो तो आपके न्यूरोलॉजिकल नोट्स देख के हमें आइडिया लगेगा, ठीक है। और अगर आई मस्कुलेचर में वीकनेस है तो उसके लिए हम लोग आई एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ठीक है। पर बिना इवैल्यूएशन के कुछ भी सही ढंग से कह पाना गलत होगा। ओके, मतलब मैं दोनों आंखों से एक चीज पे फोकस नहीं कर सकती हूँ, मेरा विजन जो है कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, उस टाइप से रहता है। ठीक है, आपकी जो ऑक्यूलर मसल्स होती है ना, बेसिकली उसका भी हमें इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि ये आपके रेटिना लेवल पे प्रॉब्लम आ रहा है। वो तो आपके न्यूरोलॉजिकल नोट्स पे होगा कि आई का प्रॉब्लम है, ब्रेन से रिसेप्शन इशू है, या आई मसल्स की सिंपल वीकनेस भी हो सकती है, राइट। तो इसमें ओके, न्यूरोलॉजिकल एंड विजुअल वर्कअप जो दोनों आपका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने भी किया होगा, उन दोनों को देखकर एक फाइनल चीज आपके लिए डिजाइन की जा सकती है। मतलब मुझे वापस से एक बार डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा क्या? मतलब आपने अभी तक क्या करवाया, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है। एक्चुअली मैं बॉम्बे एम्स में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, दिल्ली में। और मैंने केरल में भी ट्रीटमेंट लिया है, बट मेरे पास कोई, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ किसी भी रिजल्ट से, दैट इज क्योंकि ओके। मैं आई आंखें गेस उठा के किसी के सामने देख नहीं सकती हूँ। आई गेस जो एमएस सोसाइटी मुंबई में अगर आप बेस्ड है, तो मुंबई चैप्टर हमारी ये मदद कर सकता है कि आप उनका जो हेड ऑफिस साइन बेस्ड है वहां पे चले जाएं। एंड आई गेस वहां पे बहुत ही फैंटास्टिक टीम है, वो लोग अपने फिजियोथेरेपिस्ट को बुला सकते हैं। वो आपका सारा क्लिनिकल नोट्स का एक समरी बना देंगे, आपकी आई मूवमेंट का इवैल्यूएशन कर लेंगे फिजियोथेरेपिस्ट के सामने। फिर हमारे पास एक बैकग्राउंड हो जाएगी जिसके आधार पे फिर हम लोग आपकी वीडियो देख के कुछ डिस्कस कर पाएंगे एंड कुछ आगे बता पाएंगे। कहीं ना कहीं तो आपको पहुंचना पड़ेगा जहां पे विशेषज्ञ हैं और पूरी टीम आपके इवैल्यूएशन के ऊपर वर्क करेगी, बिकॉज ऐसे कुछ भी कहना गलत होगा। सर मुझे भी एक्चुअली आईज में ही प्रॉब्लम है, मतलब मेरी जो राइट आई है उसमें विजन लॉस है एमएस की वजह से। तो वो आई जो है उसका मतलब मूवमेंट होता नहीं है ठीक से, और लेफ्ट आई का ठीक से होता है मूवमेंट। तो मुझे ये बड़ी प्रॉब्लम आती है, मुझे इवन देखने में किसी भी चीज को उसमें बड़ी दिक्कत आती है। तो उसका कुछ नहीं हो सकता क्या? ये सवाल आपके न्यूरोलॉजिस्ट के लिए है। आई एम अ न्यूरो रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट। ये जो विजुअल प्रॉब्लम्स है इसके लिए आपके न्यूरोलॉजिस्ट ही इसका समाधान देंगे। मैम वो तो कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। बट एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं आपको यही बोलूंगी कि आपकी जो जी। मोबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है उसके कारण जो आप नहीं देख पा रही हैं या कम देख पा रही हैं या आउट ऑफ फोकस हाँ, देख पा रही है, उसके लिए आप हाँ, बहुत सारी ट्रिक्स यूज कर सकती है टू स्टे मोबाइल, करेक्ट। क्योंकि एक यस। डीमाइलिनेशन प्रोसेस आपकी ऑप्टिक नर्व के अराउंड अगर चल रहा है तो कहीं ना जी। कहीं से तो जिंदगी चलानी है ना, ठीक जी। है। तो यू कैन ऑलवेज मेक यूज ऑफ कॉम्पनसेटरी थिंग्स एंड आप जिस भी जगह में हैं, जैसे कि जी। इन्होंने अभी बताया, आप अपने नियरेस्ट एमएसएसआई चैप्टर को मिलिए एंड वहां जी। पे एक ग्रुप ऑफ फिजियोज आर ऑलवेज देयर, ठीक है। यस। आप चैप्टर यस। से बात करिए, उनसे मिल के आइए एंड मिलने से ही आपकी चीजों का सोल्यूशन मिलेगा। जी मैम। Doctor, thank you very much for a wonderful talk. So uplifting and so lovely listening to you. थैंक यू Doc, तारा, I गुड टू सी I यू। sleep on I sleep on my left side only. I cannot sleep on any other side. And usually I lift my upper body up first and then I slide my legs down and get out of bed. Lately, I'm having difficulty lifting my upper body. So I need help. Somebody has to hold my arm and pull me up, and then only I can slide my legs down. Please help me. That's the only thing that's keeping me from being independent now. That's the only thing, and I Go want to for be a independent. caustic. Go for a caustic wave and laser. It will be sorted. Say it again. How do you do it? A caustic Caustic. wave Yes. and laser therapy. So basically And what is laser. happening, you are making use of momentum, as what I can understand, because it's been ages I've seen you. I guess we met somewhere in 2011 or 12. I'm not Yes. sure. Yes.
Yeah. Yes. So what is happening? Because usually जब हम उठते हैं, we take a side, we get our legs down first, and then lift the upper body. That is how we teach to all our stroke patients how to get out of the bed. Because as I said in my slides, mobility का एक important aspect ये भी है कि हम bed से उठ के bathroom तक कैसे जाएं. But now what is happening in your case? There might be a spasticity in your legs. Yes, yes. Because of which what you are doing is your upper body is mobile, so you are thrusting yourself up, right? Yes. So with yes. that thrust you are able to sit, and once आप sitting Yes. position में आ जाते हो, your spastic muscle body weight से press हो जाती हैं. When the Yes. spastic muscle पे weight bearing आती है, they become loose and your legs come down. Yes, correct. That is the ergonomic way, right? Yes, So yes. इसमें 10% error होगा, because again I'm saying I've not seen you people, I'm just guessing, because this is the Correct, correct. No, yes, ergonomic behind the movement, what right? you're saying is perfect. Yes. Now what I want is first to reduce the spasticity of your legs, because once the spasticity goes away, what will happen? Yes. You will not use your momentum, because आप एक चीज नहीं realize कर रहे, हमारी body का जो upper वाला portion है, the thorax Yes. part that has got lungs, right, and which are Yes. like and rib cage है, it's a heavier organ, और अगर आप उसके momentum से आ रहे हैं, the most Correct. mobile unit of your body, the spine, L2, 3, 4, 5, they go for a toss. And Oh. if we get your MRI done, definitely you will have disc bulges, क्योंकि आप ऐसे उठ के आ रहे हो, तो you are giving all the pressure to your disc. Correct. So if you've undergone any latest MRI, just cross check with that. There might be disc bulges in your lower limb. तो Yes, एक बात आप लोग याद रखिए, हम ऑलरेडी MS से परेशान हैं, और हमारे बैड पोस्चर्स के कारण हम लोग ये और नई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ डिस्क हर्निएशन, डिस्क प्रोट्रूजन, एक्सट्रूजन लेकर आ रहे हैं. सो व्हेन दे जॉइन टुगेदर दे मेक रिहैब रियली टफ, बिकॉज उनका भी तो फीचर है पेन. MS का फीचर पेन है, लंबर रेडिकुलोपैथी का फीचर पेन है, तो हाउ टू वर्क आउट. Got it? So yes. गलत ergonomics हमने बिल्कुल यूज नहीं करने. Ergonomics is very very important काम करने का तरीका. So don't use the thrust of upper body. और अगर आपको यूज करना भी पड़ रहा है, वो विस्को के आते हैं, स्ट्रिंग बार्स आते हैं, बेड पे आप वो पुली सिस्टम लगाइए and pull yourself up with your upper limb. Okay. Shoulders are used to doing that. Yes, but I sleep on my side, not on my back. So So I एक हाथ से cannot. पकड़ो, एक हाथ से अपने आप को पुल करो. Okay. Use But can Pilates. it be tied to the bed? Can that rope or something be tied to the bed, or it must hang from on top? No, you can tie on the foot end of the bed. वो लंबा सा लकड़ का डंडा ले लीजिए, उस पे एक पुली फिक्स करवा लीजिए, और you can put a steel rod, and उसके जो cuffs आएंगे वो आप हाथ में पकड़ लेना. I'll send you a sample picture. Yes, please. And Please, just yes. text me on WhatsApp. And Yes. you know what? This is a common exercise that we use it on Pilates reformer. उसमें वो Okay. पकड़ के ही they slide their body. Oh wow. Okay. So that is going to strengthen your side muscles of the body. As simple as that. To use it trick, use that trick कि आपकी spine पे कोई असर ना पड़े. बस, that's it. So what are the two words you use, doctor? That some acoustic therapy and laser. Cold laser. Yeah. Cold. It's called. And where can I get it done in Madras? I mean, I live in Madras. Where in Madras can you have it done? I guess all physiotherapy centers must be having it. They'll know. Madras is way ahead of us. Way ahead of us. Acoustic. Say it again, please. Acoustic therapy. I'll and text you. WhatsApp please. me. I'll Yes, catch I'll you do there. that. Thank you so much. Most And welcome. what to do for spasticity, doctor? Spasticity. Sorry? For spasticity, what is the best thing to do? Legs, very bad spasticity. Acoustic is working, because we tried those stretching exercises, weight bearing exercises. The age old, they stand where there are, but acoustic helps us to break the spasticity faster. That's why I showed you that transverse myelitis case. That girl was, how she turned, all her knees used to go into flexion mode, and now she was able to sit nicely. And yesterday only I asked her to send me the video. So acoustic is promising. Acoustic is very promising. Yes. Hi, Dashpreet. Hi. I am Payal Dhakappa. I'm actually an MS patient, also a physiotherapist by profession. Okay. So, yeah, I've been into neurophysio for a very long time. And so I've seen both sides of the world. So, and when you're in this part, it's very tough to handle.
So, anyways, my question as a patient of MS is there were a lot of questions in the comments about balance issues, one thing, and second thing is urinary incontinence is another issue. Could you please address us on both these issues, please? Okay. For balance, as you are physiotherapist, catch hold of your proprioception. Catch hold of the body weight. If our body weight is low, proprioception sense is good. That means the exercises that I showed in the video, that balancing disc, the soft disc, the Boshu balance, it will and even our wobbling board, the Desi wobbling board, they all help us to regain balance. And another thing, balance has a lot of component to do. Where is your center of gravity going? If my body weight is high, the center of gravity is obviously going to go out of my base of support. That will make me fall. So I guess you now have to set an example within this year to get back your balance. And when I talk about pelvic floor exercise, use it, use it, use it, use it, or you will lose it. Right? I already have a video on pelvic floor exercises way back in 2014. That is on my YouTube channel. It's a very, very novice kind of work. I had just started playing on with computers that time, but definitely it gives a good guide about strengthening your pelvic floor exercises. Actually, pelvic floor muscles are the most smallest muscles and the most ignored ones. Yes, yes. We And the don't problem take is, until and unless major symptoms come up like dribbling of urine and things like yes. that. And they always So- hang like the hammock. See, for general public, it becomes really difficult to understand. But if we see our pelvic girdle, वो इधर नीचे लगे हुए हैं pelvic girdle के. You know, it's like, yeah, like this. So if I have my pelvic girdle like this blue part is my urinary muscles. तो हमेशा उसको gravity नीचे खींच रही है. कोई भी Right. neurological problem होगी, they will give way and start leaking. So what I have to work too much to keep it stretched and up. As simple as that. So that's why we say, agar urinary incontinence hai, even while I'm talking, when I'm talking to you people, contract, 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 contract. Keep mental imagery. कि उसको हमने रोक के रखना है, and you will be off diapers soon. Grit and commitment. Thank you so much. Most Great welcome. listening to you. Same, my pleasure. Thank you. Thank you so much for the lovely session. Yeah. Thank you. Vijay here. I am actually a placement officer. I am working at Nashik, living in Mumbai, so I do travel back and forth as well. And the thing is, ki, like the moments which I had when I got diagnosed 2021, I was completely bedridden, but now I am having a good mobility. So I can travel back and forth. I can do the supervision duties as well as I go for meetings and everything. The only thing which I'm facing as an issue is the major exertion. So once the exertion kicks in, the fatigue of the muscles is too high. And due to which I need support of someone to walk, even like move from one place to other. So what should I do in this part? Okay. Well, Vijay, as I mentioned in my earlier slides, lifestyle changes and modifications. I know it's very important for all of us to work, but can you just tell me, how are you traveling actually? Are you going I by travel by train? car. You I travel travel by by car. So do you drive it yourself? No. I have a driver. So Okay. And how much hour journey is that? 5 hours. Do you use a lumbar support? No, I don't use anything. I walk without any support. The thing is, na, whenever I enter Nashik, I have seen this weather change because it is having a good climate, I guess, the walking pattern and the breathing air and everything else. So my walking pattern and everything changes. I'm much more able to walk over there, much more able to balance myself. Hence, I'm able to push myself. Whereas when I come back to the humid and dry climate of Mumbai, it becomes tough for me to even walk in the evening hours. So I have noticed a lot of changes due to the weather, which directly affects me. And the thing is, Correct. like in Nashik, I'm able to perform much more agile and much more properly, much more efficiently rather than in Mumbai. Right. But do we have a solution not to come back to Mumbai? Yeah, I have to come back to Mumbai for the meetings and everything. Yeah. So we don't have a solution. We have to come back, right? We don't Yeah, have an both. option.
No, no, we don't. And we have to go to Nasik, correct? So Yes, what do we yes. need to do? We need to do certain energy conservation techniques. See, Okay. as what I mentioned कि जब चीजें अच्छी लगती हैं, you know, when we are in a good mood, तो एक Domino's का पिज्जा थोड़ा ठंडा भी होगा तो अच्छा लगेगा. But when we are in a bad mood, the delivery is at 32 minutes, we just like lose our head. What I'm trying to tell you, आप 4 घंटे का सफर कर रहे हैं और आप गाड़ी में एक lumbar support भी नहीं लगा रहे हैं. So how much strain are you putting it to your spine? Yes. It is not आपने और foot rest भी नहीं आप अंदर रख रहे हैं, तो how much strain are you putting it to your legs? No doubt वहाँ की weather conditions अच्छी हैं. जब भी एक environment friendly लगता है तो हमारे अंदर automatically एक feeling of well-being आती है, which gives us more energy. But जैसे ही आप वो भीड़ वाले area में आ जाते हैं मुंबई के, and even when the weather conditions are not congenial, all these things start taking a toll. So what you need to find out first कि ये जो आपका फटीग जिसे आप कह रहे हैं या एग्जॉशन है, इसके करेक्ट रीजंस क्या क्या हैं? Are you supporting your body well enough to take 4 hours of journey? Because frankly, to my low back patients, even if they go 2.5 hours to Rajgir, I say big no. Because prolonged sitting in one position that presses upon your piriformis muscle and which causes exaggeration in your sciatica symptoms. तो हम अपने patients को allow ही नहीं करते, हम कहते हैं आप लेट के जाइए, आप लेट के जाइए, गाड़ी में करवट लेके जाइए, बट आप बैठ के बिल्कुल नहीं जाएंगे बिकॉज ये इश्कियल ट्यूबरोसिटीज आर रेस्टिंग एट वन पोजीशन. सो प्रोबेबली ये छोटी छोटी चीजें जो हम इग्नोर कर देते हैं, दैट एड अप टू आवर फिजिकल एग्जॉशन. सो पहले आपको उसको वर्क करना है. इन्वायरमेंटल तो यू हैव टू अडेप्ट, यू कैनॉट वर्क ऑन दैट, आप उस पर कुछ नहीं कर पाएंगे, बट यू हैव टू सेव योर एनर्जी एंड मेक श्योर यू रीच वेल रेस्टेड. That would be my advice. आप थोड़ा अपना travel modifications करिए The and thing is, lumbar like, I support don't travel every day. I don't travel every day. It's like you can say in a month I travel at least 3 times. So I stay there also. I stay back in Mumbai also. So it's back and forth. back and forth. And how about your exercise schedule? Are you into any strengthening program per se? I was into a neurophysicist. Matlab, I was taking that, but due to my work and other commitments which I had, I I will not to. take that. I will not take that. So I will not take that. So if there is anything which through which, yeah, I saw the e modules which you showed us. If there is anything which I can like subscribe to or like do anything so that I It's can all get. available free of cost on my YouTube channel. Just keep doing it week after week. You can keep sending me through WhatsApp whatever exercise you are performing, and I can send you the corrections. But your commitment has to get higher. For sure, for sure. Thank you so much. All the best. Thank you. Hello, ma'am. Hi, Renika. For the really nice talk. No, ma'am, I'm audible. Yeah, you are audible, Renika. I can make out. I am 22 right now. I got diagnosed in 2020. I have walking issues, speech issue, and a lot many other problems. I can't even write. So I wanted to ask, why did my disease progress so much in just 2 years? Because I'm a relatively new person to MS, but I am most disabled because I can't even walk without support. Okay. रेणुका, पहली चीज जो आप कहाँ पे रहते हो? नागपुर. Okay, the orange capital of our country. Yeah. Okay. So रेणुका, पहली चीज ये है कि कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है? हमने 12-13 साल के भी पीडियाट्रिक MS पेशेंट्स देखे हैं, और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगता है कि आप बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से अफेक्टेड नहीं हो. क्यों? क्योंकि कितनी ब्यूटीफुली आपने अपनी बात समझाई मुझे. आपको ओरोमोटर प्रॉब्लम है, आई कुड सी, आपके स्पीच इश्यूज है, बट जो आपको बोलना था आपने बहुत ही सीमित शब्दों में क्लियरली बोला है. दैट मीन्स माई ब्रेन इज वर्किंग वेरी शार्प.
सो अब हमें क्या करना है, आपकी ब्रेन की जो शार्पनेस है उसकी एनर्जी को टैप करना है। और जैसे आप ऑलरेडी अपनी प्रॉब्लम जानते हो कि आप लिख नहीं सकते हो, आपको बोलने में दिक्कत आ रही है, तो हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट विद ओरोमोटर एक्सरसाइजेस। करेक्ट, जैसे छोटे बच्चे को आ ई ओ ऊ सिखाते हैं, क्या कर लेगा ब्रेन हमारा। देखो वो जो लड़की का मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था, मैं यहाँ पे कोई फॉल्स उम्मीद रेज नहीं करना चाह रही, बट हम भी अचंभे में हैं कि वो कैसे उठ के बैठ गई और कैसे उसके हाथ चल रहे हैं, जबकि उसकी सर्वाइकल कॉर्ड में ही प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं है, हमारे मेरे घर में ही 2 बहुत सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और ये लड़की सीएमसी विल्लौर में भी दिखा के आई है, निमांस बैंगलोर में भी दिखा के आई है। हर कोई कह रहा है सिर्फ रिहैब करो, सिर्फ रिहैब करो, इसके लिए कोई दवाई नहीं है। मेरा बस एक ही टेक होम मैसेज है जो मुझे भी अपने पेशेंट से सीखने को मिल रहा है, हमें नहीं पता किस बीमारी में आगे क्या रखा है, पर हमें ये जरूर पता है कि जो रिहैब एकदम एकदम श्रद्धा से कर रहा है, ही और शी इज अ विनर। तो आप ओरोमीटर एक्सरसाइजेस करो, करो लिखने की कोशिश, नहीं लिखा जाता दूसरी बात है, गंदी हैंड राइटिंग दूसरी बात है, मोटा पेन लो, एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़ो, लिखो, जिद पे उतरो, जिद पे उतरोगे तभी आप जीत पाओगे। ठीक है, ओके बेटा, टेक केयर, टेक केयर। Ma'am, I'm a dental surgeon. Here I have a problem of food drop on my left leg. The problem is the physiotherapist has suggested me a splint, but I'm using it only when I'm doing a treadmill walk, not on a regular base, because when I wear that, I need to use a shoes, which is very I feel it heavy, and I'm not able to work also properly because of my left leg drop. My main problem is that nowadays I have a fatigueness even in my left hand. So what is that that I can improve on so that I can be working on my patients? Okay, ma'am, where are you based? I'm from Kerala. Okay, so we have seen a lot of foot drop cases in MS and non-MS. So I would like to share my non-MS experience, because these days what I'm doing is जो मुझे general neurological में मिलता है उसको मैं MS में apply कर रही हूँ. Right, because the pathophysiology might be different, but at the end the nerves are same everywhere. I'm really not sure, but definitely if we are getting the result, that is what a patient wants, and that is what as a therapist we want. So we had a similar case of rather bilateral foot drop of a lady who just gave C-section. तो उनका इंजेक्शन गलत क्वाड्रेंट में लगा था, तो पहले एक साइड लगा फिर दूसरी साइड लगा, एंड उनका बेबी भी नहीं बच पाया, and she came to us with the foot drop. So what we did is, thank you, we did the laser therapy and acoustic wave therapy, but since this was a lower motor neuron, I'm using a little bit of technical term because you are Okay. from the Yeah, yeah. medical Okay. this thing. I could get that. राइट तो हमने उनका नर्व कंडक्शन टेस्ट पहले करवाया ऑफ द लोअर लिम्ब, Okay. एंड उसके बाद हमने लेजर थेरेपी, आपका जो कॉमन पेरोनियल जहाँ पे वाइंड अप करती Okay. है नियर द हेड ऑफ द Okay. फिबुला, वहां पे लेजर दिया, और शियाटिक Okay. के डायरेक्शन में, बिकॉज जो फुट ड्रॉप का मेन ओरिजिन अगर लेकर जाए शियाटिक के लेवल पे हमने Okay. अकॉस्टिक वेव दिया, एंड वी गॉट रिजल्ट्स इन 1 मंथ, उसका पूरा रिकवर हो गया था, एंड स्प्लिंट वाज आल्सो गिवन कि उसके ओवर स्ट्रेचिंग ना हो व्हेन शी वॉक्स. सो प्रोबेबली इवन केरला इज वेरी मच एडवांस इन मेडिकल साइंसेस. सो आप पहले अपना नर्व कंडक्शन टेस्ट करवा दीजिए, जिससे हमें ये Okay. पता चलेगा व्हाट इज द पेटेंसी ऑफ द नर्व, Okay. right, at the lower Okay. motor neuron level. This can be because of your multiple sclerosis plaque in the spinal cord, because since I've not Okay. seen your MRI, so Okay. differentiating both will be difficult. Is there any possibility that I can have an online consultation with you? Yeah, you can always do that, give me a video call on Yeah. WhatsApp, but the problem is then you need to be ready with all your medical reports. Okay. Okay, that's okay. But then just give me your number so that I can contact you. Yeah. I don't want to waste other people's time also. That was a fantastic session from your side. Thank you so much. Yeah. मैम मुझे टर्निंग में मतलब डायरेक्शन जब चेंज होता है या तो लेफ्ट या तो राइट, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं गिर जाती हूँ तब. मतलब चलते चलते जब आप टर्न करती हैं? हाँ, इफ अगर मैं स्ट्रेट चलूं तो ओके रहता है मेरे लिए, जब टर्निंग में आता है या तो यू टर्न या फिर लेफ्ट या फिर राइट, मैं गिर जाती हूँ, मैं नहीं टर्न हो पाती हूँ. तो वो उसके लिए कुछ स्पेशल एक्सरसाइज, वो मेरा क्वेश्चन था.
हाँ, बेसिकली जहाँ तक खैर मैंने आपको देखा नहीं है, पर मोटा-मोटी जो मैं आपको गाइड कर ओके सकती हूँ ओके कि ओके हम लोग जब भी टर्न करते हैं तो बेसिकली जैसे ही बॉडी साइड शिफ्ट करेगी तो उसी स्पीड से हमारे पैर आगे आने चाहिए। तो हो सकता है आपकी ओके बॉडी टर्न कर रही है बट पैर उतनी स्पीड से आगे नहीं आ पा रहे कि वो एक टर्न बॉडी का भार उठा पाए, जिसके कारण आप टॉपल कर जाती हैं। तो अच्छा व्हाट यू अच्छा नीड टू ट्रेन इज अपने आप को बैलेंस ट्रेनिंग करनी है। और अगर आप किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलेंगे, एक फ्रैंकल एक्सरसाइजेस होता है फॉर कोऑर्डिनेशन, जिसमें पैर को आगे दाएं बाएं उसको पहले स्लो और फिर फास्ट होता है, ताकि बॉडी हैवी है, वो जैसे ही घूमेगी आपको पैर को उठा के स्विंग करके आगे लाना है। तो वो पहले आएगा, बॉडी बाद में घूमनी चाहिए। तो वो दैट्स द चीज प्रॉब्लम मैम, रिफ्लेक्स दैट्स डालिए, द प्रॉब्लम, मैं नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि आपके हिप मतलब मसल्स वीक हैं, आपके हिप मसल्स वीक हैं, तो आपको उस पे पूरा वर्कआउट करना पड़ेगा। आप उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करिए एंड ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ओके ओके ठीक ओके। है? एंड सेकंड प्रॉब्लम मैम, मुझे निस्टैग्मस है। डबल विजन की प्रॉब्लम मुझे नहीं है, बट निस्टैग्मस है। देयर इज एनी एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी फॉर में नहीं दैट? है, फ्रैंकली फिजियोथेरेपी में नहीं ओके है। ओके जो हम अडेप्टेशन वाली भी देते हैं वो एमएस निस्टैग्मस में नहीं, मैंने इतना वर्क करते हुए देखा है। अच्छा अच्छा जी ओके, नो इशू, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। Morning. Good afternoon, doctor. गुड आफ्टरनून। My name is Guneet Tandon, and I'm an MS patient for the last 23 odd years. Believe I'm taking care of my MS in a good way, but I am not able to walk really. So I'm using assistive aid to do the walking and balance issues. So I want to have a one-on-one consultation with you to just try and understand what are the specific exercise I should be focusing on. I'm based out of Bangalore right now. So just wanted some consultation from you. I mean, I have all the issues that were mentioned in this chat as well. Like gait pattern is weak. I use a wheelchair at time most of the time to quickly do the task and not to lessen my fatigue. So I'm doing all the things possible to conserve my energy. But in this process, I'm not able to improve my mobility. So I Right. need a guided approach to kind of break this threshold. Okay. This is something I really require some support. Yeah, please. Fine. So I have just shared my number, my WhatsApp number with you in the chat box. So just send me a video of your walking or whatever your mobility thing is there, and we can take forward from there. Great. Okay? Thank you, doctor. Thank you so much. Most welcome. Take care. हेलो मैम। हाय सकीना जी। मैम मेरा है कि कोई भी मुझे कुछ बोलता है तो मुझे बहुत देर बाद समझ पड़ती है। मेरा ब्रेन इतना वो हो गया है कि कोई कह के चला जाता है, उसके बाद मेरे को मालूम पड़ता है इसने ये बोला। समझ में नहीं आता कुछ भी। सुडोकू और खेलिए, बच्चों के साथ लूडो खेलिए। नहीं मैं ना सर के यहाँ पे डॉक्टर इंदौर देवास से हूँ, इंदौर दिखाने जाती हूँ तो लिस्ट बना के लेके जाती हूँ कि मेरे को डॉक्टर को ये बोलना है। मैं पढ़ती हूँ पर मैं बोल नहीं पाती डॉक्टर से कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। वो मेरे से 10 बार सवाल करते हैं, बोले कि आपको क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मैं बोल नहीं पाती कि मेरे को सूझ नहीं पड़ती है। कोई बोल के चला जाता है, उसके बाद मेरे को समझ आता है कि हाँ इन्होंने मेरे को ये बोला था। तब तक वो इसको काम हो हम लोग जाता है। कॉग्निटिव प्रॉब्लम कहते हैं। बेसिकली क्या है, ब्रेन फॉगिंग भी इसका दूसरा नाम है। यूजुअली एमएस में हम लोग बात करते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में, जो आंखों से दिखता है। ये जो आप चीजें कह रही हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को एड्रेस कर रही हैं, कॉग्निटिव प्रॉब्लम। सो बेसिकली अगर आप इंदौर में हैं, कोई भी न्यूरो साइकोलॉजिस्ट होगा, उनसे आप अपना कॉग्निटिव एनालिसिस करवा सकती हैं, ठीक है। वरना ऑनलाइन टेस्ट, मोका वगैरह ये सब है, किसी से भी आप बात करेंगे, जो भी न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट भी है वो भी आपकी मदद कर सकते हैं। आपका एक स्कोरिंग निकल आएगा। जैसे ही आपका स्कोरिंग निकलेगा, आप वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं एंड फिर मैं आपको कुछ टेक्निक्स शेयर कर सकती हूँ, जिससे इस प्रॉब्लम से आप काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जो अभी लास्ट मैम ने बोला कि उनका बैक ये टर्न होते से वैसे मैं भी गिर जाती हूँ। टर्न होने के टाइम पे मेरे को समझ नहीं पड़ता कि मेरे को टर्न हो गया है, जैसे बैक देखने जाती हूँ वैसे ही गिर जाती हूँ। ठीक है, आप भी अपना एक वीडियो मुझे भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं पूरा देख लूंगी कि आप कैसे चल रही हैं एंड फिर उस हिसाब से मैं आपको जो भी गाइड होगा वो कर पाऊंगी, ठीक है। नंबर मैंने भेज दिया है, ठीक है जी। ओके, थैंक यू मैम। टेक केयर, बाय। मैडम जी
Madam, I'm Prasanjit calling from Guwahati, Assam. I've been in wheelchair, totally wheelchair bound for the last around 14, 15 years. Of late, there is some improvement, but there is paralysis of the extreme paralysis in the lower leg muscles. If I take baclofen or tinicidin, something like that, I sleep a lot, and it becomes very difficult even for me to turn around. So, how to overcome this paralysis, See, particularly? पैरासिस आप जो यूज कर रहे हैं टर्म, इज इट डायग्नोज और इट इज पैरालिसिस? Yes, दोनों yes. में बहुत फर्क है, राइट? This has been written by AIMS, All India ओके, Institute of Medical Science. तो इसका मतलब आप सपोर्ट और गेटर्स के साथ खड़े हो पाएंगे? हाँ, ये जावेद MSSI ने मेरे को एक चेयर दिया है. I've been standing on this for the Okay. last 2 years, but things have not. Fantastic. I've been using this, and muscle wastage has gone. The muscles have tightened, but I've been not been able to get up on my own. ओके, और आप कोई रेगुलर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में है? फिलहाल जो एम्स गुवाहाटी ने बताया मेरे को, उल्टा होके सोते हैं, थोड़ा बहुत ये करते हैं. बताया नहीं, कोई रोज आ रहा है? नथिंग लाइक दैट. वो खड़ा होते हैं और एक्सरसाइज करते हैं. नहीं, आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट को हायर करिए, एंड Okay. अगर कोई स्टूडेंट भी हो उनको बोलिए आप वो रेगुलर आए और आपको एक्सरसाइज करवाए. सुपरविजन में करने से, अगर आपकी ऑलरेडी 14 ईयर से व्हील चेयर बाउंड होते हुए भी आप इतना बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, तो थोड़ी सी मेहनत और खींच लीजिए. Thank you. This can be overcome, na? आई कैन नॉट अश्योर, इट डिपेंड्स ऑन योर कमिटमेंट But एंड my मेहनत. gut feeling is that if I can get out from bed, I was totally bedridden, If I can get out from the bed and all this positivity, so I should be able to, if I can stand, I will be able to take some steps. सी, आपने खुद ही जवाब दे दिया है. सो नाउ द आंसर इज यस. So, calipers, You can KFOs overcome. do not help me, madam, that much. डोंट गो फॉर इट, डोंट गो फॉर इट. सपोर्ट लेके खड़े होना करिए, और ज्यादा होएगा तो गेटर्स लगा लीजिए ताकि नी बकलिंग ना हो. नी हाँ, बकलिंग वो अवॉइड करिए. KFO लगाते हैं जो CMC वेलोर PMR डिपार्टमेंट में दिया था, but it doesn't help. It kinds of stiffens me up. तो छोड़ दीजिए. सी, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू. आप लोग अपना प्रोग्राम खुद से डिजाइन कर सकते हैं, बट यू नीड अ लिटिल But बिट the ऑफ knee असिस्टेंस. buckles, हाँ, तो lot of. उसके लिए आप गेटर्स लगाइए. जो गेटर्स आते हैं ना, जो थाई से पहना जाता है एंकल तक, हाँ, आप वो यूज करिए. केएफओ आप छोड़ दीजिए, वो नी को पकड़ के रखेगा. वो KFO छोड़ के उसको लगाया, लेकिन पूरा लेग स्टिफ हो जाता है. पूरा लेग स्टिफ हो जाता है. हाँ आप जी, हाँ जी थोड़ा मैम. फिजियो को बुलाइए, आप फिजियो को रेगुलर अपने पास बुलाइए, ठीक है? और एक बार अपना वीडियो भी भेज दीजिएगा, फिर उस हिसाब से आपको मैं और गाइड कर पाऊंगी. बट यू नीड सुपरविजन. ये जंग अकेले नहीं लड़ी जाएगी. पक्का इतना देर तो आया. Thank you, madam, so much. मोस्ट वेलकम. And MSSI has helped me by giving me the standing wheelchair. I stand daily for 1 hour. फैंटास्टिक, Thanks, MSSI, Javed ji and all. I can only say that Prasanjit has commitment and he has shown a lot of improvement. Now he is able to stand on his standing wheelchair. So definitely he can, improve. Yes. Thanks, MSSI, for gifting me the chair. It's a life-saving one, मुझे सिर्फ ये पूछना था मैम से कि मेरे जो साइड में शोल्डर है ना, शोल्डर ऊपर अपने कंधे के यहाँ पर, वहां थोड़ा सा ज्यादा हाथ अटकता है मेरा. ये ऐसा ऊपर करने में सिर्फ इस एरिया में थोड़ा ज्यादा दिक्कत आती है. आपको फ्रोजन शोल्डर तो नहीं है? नहीं, अभी तक तो दर्द वगैरह नहीं था, पर शुरू से ये लेफ्ट साइड में मेरे को प्रॉब्लम है, पैर में चलने में भी, और इसका को जैसे ऐसा पूरा नहीं उठता है. मतलब अपने बाल बनाने में और गठान वगैरह जैसे नाड़ा बांधने में, सब में थोड़ी दिक्कत होती है. इसमें बस एक बारी हमें इवैल्यूएशन करना है, बिकॉज जो आपका शोल्डर जॉइंट होता है बहुत कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है, ठीक है? एक बॉल होता है जिसमें आपकी बाजू की हड्डी आके अटकती है. तो अगर आपको इस मूवमेंट में बाहर ले जाने में दिक्कत हो रही है, तो हमें उसका इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि क्या ये MS रिलेटेड सिम्टम है या आपका फ्रोजन शोल्डर है. तो आप जहां भी रहती है, एक बार एक फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा लीजिए. उनका जो बेसिक इवैल्यूएशन होएगा आप मुझे भेज दीजिए, एंड फिर हम लोग उसके आगे आपको गाइड कर पाएंगे. जैसे ये वाला हाथ है मेरा, इस हाथ में भी जैसे थोड़ा सा ये जैसे उंगलियां ना अच्छे से मूवमेंट नहीं करती है. अटक रहा है ये. हाँ, मैं जैसे गेंद वाला भी एक्सरसाइज करती हूँ, बॉल पकड़ के रबर से भी, पर फिर भी जैसे ये ना ऐसे हो थक जाती हूँ ना, तब तो ज्यादा ही फोल्ड हो जाएगा,
और थोड़ा सा कम करती हूँ तो थोड़ा फिर भी सीधा ऐसा रहेगा सीधा। और पैर में भी जैसे थकान जल्दी से हो जाती है, फिर जल्दी से अपन लेट जाओ, ज्यादा देर बात भी करो तो भी थक जाते हैं। अब जैसे अभी अपनी आपकी क्लास के दौरान 2 बार मैं लेट के फिर उठी हूँ, पर वो बार बार फिर थकान जल्दी से हो, ज्यादा बात भी नहीं करना है, और चलते हो तो थोड़ा मुश्किल ही रहता है, पकड़ के चलती हूँ वो भी थोड़ा सा थी। और खाने के शौकीन हैं आप? मैं खाना जैसे सब्जी रोटी खा रही हूँ, बाकी मैदा वगैरह सब चीजें अवॉइड कर देती हूँ, बाहर की चीजें नहीं खाती हूँ। और वजन और कंट्रोल में रखना है, सबसे बड़ी हाँ बात वजन कंट्रोल में रखना है, ठीक हाँ, है? वजन तो मेरा हो गया कंट्रोल में, मतलब अभी 57 समथिंग कुछ चल रहा है, पहला 67 था मैडम। और वेरी 2020 नाइस। में जब मतलब मेरा हुआ था पता, और 21 में ना मैंने बहुत अच्छा चलने लग गई थी, बहुत रिकवर कर लिया था, पर थोड़ी स्ट्रेस प्रॉब्लम आ गई एकदम से फैमिली के अंदर, तो फिर वापस मैं डाउन हो गई एकदम। तो नहीं, ऐसा आप अपना कर वीडियो भेजिए एंड एक बारी फिजियो से इवैल्यूएशन करवा दीजिए। कौन से शहर में हैं आप? उज्जैन शहर में। ओके, तो वहां पे आई एम श्योर एमएस का कोई ना कोई प्रोविजन होगा, बात कीजिएगा एंड फिर उससे हम लोग आगे ले जाएंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। थैंक यू। So we are closing this question answer session, and I would like to thank Dr. Dashpreet Kaur for sharing important tips, tricks to increase the mobility in MS, and I hope this will be useful for all of us. And this was a wonderful session attended by approximately 100 participants. So in future, we are expecting more sessions like this, and we will try to reach other person with MS, those who want this type of session. So thank you very much, Dr. Dashpreet. It was really a wonderful session. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am.